Check. गाली टी मना करो गाली टी मना करो लाइव स्टार्ट करो बढ़िया फ्रेगनेंस देता हूँ बढ़िया फ्रेगनेंस देखो बर्नर दुटा पसंद आवा कि केनता केना আছে এটা দুটো নিতার আছে लोकल है ना मैं बोल रहा हूँ ना तेरे को लोकल है करके ये बोलो तुम जैकेट तुम्हें भी चाहिए क्या तुम लाल वाला जैकेट नहीं था लाल वाला जैकेट है मला तो लेना होती है एक तरह मेरे पास तुम पैंट मोर पैंट जगाते और क्यों डिफरेंस है लाइव स्टार्ट कर लेना
हाँ देख रहा हूँ। हाँ पैंट ले लिया खोज रहा था तब से मैंने जब भी क्या
Good evening, everyone. Am I audible? Yes, bhai. Okay. How are you all? Good, bhaiya. Yes. Shashavan, do you know Swabiman? Not personally, bhaiya. Okay, okay. Did anyone try that haptic thing? The vibration? Bhaiya, can you repeat again? I didn't hear. Okay. I asked, did anyone try that your haptic vibration one? The code I dropped in the group. Yes, I wrote the code and also the permission line, but I didn't feel any vibration. I Okay. wrote Okay. I'll check that. Okay. What was the issue? We'll check. Mujamil, did you give it a try? yes, bhaiya. Mm-hmm. For you also, I guess Abhiman is here. I I guess. guess. Hello. I I guess guess. the echo issue has been solved, right? Now it is not echoing. No, bhaiya. Okay, okay. Yes. So I guess we should start.
Swamiman will not join perhaps. Has he dropped any message? No, bhaiya. Oh, No भैया. he might not be joining today then. So my screen is visible to you? Yes, bhaiya. Yes. Yes भैया. So ah, so yes, Simon was telling that he did it and there was no, like he could not solve it. Let us look for Simon. How can we solve that? Simon, can you show your screen? Yes भैया. Hmm. क्योंकि पहले सप्लाई थी, क्योंकि पहले भैया थोड़ा सा. No issues. Take your time. Yes भैया. It is visible भैया. It is visible. Simon, wait for a while. 1 minute, wait, please. Yes भैया. Yes, Simon. Now you can show. Okay, it is visible. Yes भैया. भैया इतने ही आप जो बेसिक किए थे वो सब क्या? अच्छा अच्छा, तुम वो ये जावा वाला नहीं किए हो क्या? नहीं नहीं, अच्छा और अच्छा जावा वाला नहीं किए. अच्छा, मुजामिल तुम किए हो क्या? हाँ भैया. हाँ, देन आई फिर तुम स्क्रीन शेयर कर लो. Okay, भैया.
यस भैया, अब क्या करना? हाँ, सो तुम एंड्रॉयड मैनिफेस्ट पे जो कैन यू प्लीज ओपन योर एंड्रॉयड मैनिफेस्ट? यस भैया. ओके, yeah, so while you are running, is it not like vibrating on click? नो भैया, वाइब्रेट नहीं हो रहा, लेकिन एरर भी कुछ नहीं दिखा रहा, ऐसा कुछ. Okay, then do one thing, show me that main activity dot java again. यस भैया. First I wrote the vibrator variable, then here initialization, then here the code. Okay, do one thing, let us check where is this. That so for now what I am doing is I'm pasting the code. uh, can you please check if this works for you? Okay, once paste the code. यस, ये सेम ही कोड है. फिर रन करने से कुछ प्रॉब्लम आ रहा है क्या? नो भैया, कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रहा, बस फील नहीं हो रहा, मतलब वाइब्रेशन, ऐसा कुछ. So तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. चैट मे बी जीपीटी. एम हाँ, मे बी डिफॉल्ट एम्पलीट्यूड है इधर. चलो एक बार डिफॉल्ट एम्पलीट्यूड को हम देखो. डिफॉल्ट एम्पलीट्यूड मतलब क्या कि जो तुम्हारा वाइब्रेशन होता है ना वो कितना स्ट्रांग रहता है वो डिफाइन करता है. तो वो डिफॉल्ट में कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. ठीक है, एक बार मिली सेकेंड को बढ़ा के देखो. डिड यू चेक विथ चैट जीपीटी? यस भैया, क्या बोला? सेम ही कोड बोला हूँ. ओके, देयर इज वन थिंग, एक्टिविटी डॉट मेन पे शायद हमें कुछ ऐड करना पड़ता है. गिव मी अ मिनट. बिल्ड करने से नहीं हो रहा है ना? मतलब वाइब्रेशंस नहीं आ रहा है? नो भैया.
ठीक है, I'll check and tell you what is the issue. Huh. But for today, let us integrate progress bar. Okay. So the other day when I shown you the app, you must have seen one thing that there was this progress bar, like it was showing how much you have completed. So what we will be doing is, let me show you. If you run this app, my screen share is off, right? Yes, भैया. Yes, right. Is it visible now? Yes, भैया, please go. Yes. So why did this app did not run? Okay, okay, it is running. So what we will do is, you see, this is like the progress bar. When you click, can you see how with each click your that Yes, भैया. circle is getting completed? Okay, so we will be implementing that today, and I guess after that we will try to complete some more things. Okay. भैया, अब हाँ, वो yes. रन हुआ. अब वो हैप्टिक मोड मोबाइल में ऑफ था सेटिंग्स. अच्छा, सेटिंग्स में ना, तो ये ऐप अलाउड नहीं था क्या? परमिशन अलाउड नहीं था? नहीं भैया, वो सेटिंग्स में हाँ फीडबैक अलाउड नहीं था, हैप्टिक फीडबैक. ओके, नाउ इट इज वाइब्रेटिंग, राइट? यस. अच्छा अच्छा, ओके, ठीक है, फिर बाकी सब भी वही कर लेना फिर. देन जस्ट टर्न ऑन, just turn on your haptics, okay? Permission. Yes, भैया. हाँ, तो फिर next, so we should start implementing this progress bar by down, right? यस भैया. Yes. So I'll coming back to the to my to our that old project Hello World. Okay. For me this is Hello World, but for you guys it must be the counter app itself, right? So there are two ways you can implement progress bar. For progress bar, there is even it is present in the native material design. So material design is a class provided by Google itself. It has many of the thing. Material design 3 is the current one. Okay. So it has many component, out of which progress bar is one. Okay. Uh, Basically one more thing, like you can do multiple things out of material design.
but you see how whenever you add, uh, look, whenever we add, we get a default button. Okay, so each time you add, the color of this button will be same, and you cannot change much of this. Even if I change the background of this, okay, to Yes, I tried this actually, but it did not work. yes, is this Siman? Sustavan bhai. Okay, so Sharma. Okay, you tried this, but it did not work. Yes, exactly. When you do that, it doesn't work for Android. Okay, because this is the native Android button. Okay, but if you change this button to the material design, okay, so you change this to com dot. So yes, this material button, and you do now you add a background, then it, wait, I guess I added something wrong. Sorry, my bad. Here you, if you, is this not working? Yeah, background color it will work. We have to give at the end, right? Hmm. ये ऐप कॉम्पैक्ट बटन में काम करेगा. At the red color. नहीं, एट द रेट कलर वो तो, इफ यू सर्च ब्लैक, वो एट द रेट कलर आ जा रहा है. ऐप कॉम्पैक्ट वाला यूआई पे काम करता है क्या? बट मटेरियल बटन पे भी काम करता है. लेट अस ट्राई फॉर ऐप कॉम्पैक्ट. यस यस, सॉरी, माय बैड. ऐप कॉम्पैक्ट पे, क्योंकि इवन यू कैन ऑल्सो डिजाइन द UI for your like button. In following classes, we will even see that uh, how can you design the uh, your how can you design the UI for this button. We'll see that. And so similarly, um, the progress bar is also provided by your Google Material Design. Okay, so for now, let us do that. Uh, Yesterday we have used this constant layout. Today we will delete that, because we need not, we don't need this static circle anymore. Rather, we want a, what do we want? We want a progress bar instead. है ना? So we will remove this. So it got dissociated. Okay, because before they were bind by the constraint layout, so they were grouped, but now it has been removed. Now what we will do is, we will take a linear layout, or what you can do is, you can keep that constraint layout, but we will just remove the background thing. Okay, because we will still need the constraint layout to look. At this point, you can use the local history. Okay, if you go to local history, I'm telling you how to restore. If you deleted something, and even from undo, if you cannot restore, then you go to local history, you select the show history, and here you see
we have changed the constraint layout. So I guess here also it is same. So you just click on revert selected and letter changes. Then everything which was there will come back. Is that okay? We had changed this to button and the background was black. The text color was white. Yes, and yes. So alongside that, we had yes. Now we will remove this Android background drawable black. We have created a circle yesterday. We will just remove that. And what we will do is we will add a progress bar here. Okay, not progress bar. To be honest, we will be using circular progress bar. Circular progress indicator. Sorry. Okay, and we will do wrap content for now. Okay, and why we are doing wrap content and not defining size, because using width or height property you cannot control the size of this indicator. Okay, so to control that we will be using, there is one property known as indi indicator size. Okay, in indicator size, if you give 20 dp, sorry, it was track, sorry. And I have been using this for the first time, so I'm forgetting. Yes, it is indicator size only. Just because it is small, it was not visible. Yes. Now what we will do is we'll bring the indicator over here. We'll attach the constraints. Okay. Uh, I guess the progress bar came inside the constraint layout. We don't want it inside the constraint layout. So we'll remove this. Are you guys with me? Yes, भैया. Uh, Yes, we like with me as in you are getting confused or you are following up, or I'm going too fast. Everyone? yes. Yes, भैया. I'm going too fast. No, yeah. No, भैया. Okay, then. Yes. So now what we will do is let us increase its size a little more so that we can uh, okay, we will make this 250 dp. That will suffice, I guess. Yes, it's good now. And now we will, why is this moving?
Actually, we don't want the progress bar to be inside this. So what we will do is rather we will constrain it to the walls of the parent, and by doing that we'll now have this. So this has been centered. Okay, we need to move it little left. We moved. Okay, done. Anything else? Yeah, there is one thing. So basically, if you clearly see that, uh, let me show you by running this app again so that you can better understand. Okay, kindly see this properly. So you see a light yellow track. Okay, and when I click, there is a indicator running on the track, right? So we will be like this yellow, light yellow color is controlled by the indicator color. There is a property name as indicator color. Okay, look here. Sorry, the this orange one which is half covered. Like अभी तक कितना हुआ है? Till now, how many counts have been done? That is controlled by indicator color. And how many more, like जो हमारा जो ट्रैक होता है, जो हम लोगों का ये सर्कल होता है जिसके ऊपर ये इंडिकेटर रन कर रहा होता है, उसको हम लोगों कंट्रोल करते हैं ट्रैक कलर प्रॉपर्टी से. इट इज क्लियर टू एवरीवन? Yes, Bhaiya. Yes. So now we will here in track color we will assign some color. Okay. So from custom color we will select a color. Let us take a shade of green. We'll keep it light because the other color will be covering it. Okay. So we will, yes. Now we will control the indicator color to, let's say, what we will do? We will make the indicator color something. Okay. So when we will use this color will be the representing our indicator. Now we will come to the Java code for this. In Java code, first of all, we will make a circular progress indicator. I guess we have not, let us call it as, we have given this the idea of circular indicator. Now, in this circular indicator, okay, no problem, we can write it progress. And here we will write this as progress. Yes. Now on create, in this inside this on create method, we will view bind. What was view binding? Can anyone help me? Find viewer. Yes.
So we stitch the view with its ID and its object. Okay, so to its object we pass which one are we referring to. So from r.id, what was the name we gave? We gave it as circular indicator. The circular indicator ही दिए थे ना? अच्छा यहाँ पे तो हम आईडी ही नहीं दिए, आईडी ऐड कर देंगे. Okay, एक चीज, many of time you might see a underline here. Okay, and it says that there is no declaration ID in your XML file, but yeah, so you might see this underline, but it is a false underline. Okay, you can flag this, you can like give feedback on this warning that this is false positive. Okay, so that in further suggestions it can improve. Okay, now what is there is one property which help us to set the limit of the the circular indicator. Okay, so if you see here, I'll refer to the project. Okay, here there is one property. Actually, even there is no need to, there is a method. Okay, there you need not to actually set the limit, but if you see the official documentation, then it advises to use a limit. Okay, but I tried to do it without limit, it worked. Okay, so you go to set progress. So basically what we are doing is, with each click we will be telling how much have we gone in the indicator. Okay, so here we will set the count. What we will pass? We will pass the count itself. Okay, we will pass the count, and here there is the second parameter we need to pass. Why this count is showing wrong? Okay, it was count var. There was nothing named as count var. We will pass it. Then there is one more thing named as animation. The second parameter defines about if you need a animation, like by if it moves by one step or 1 degree, then do you want to show the animation of moving it, or you just want to quietly uh, complete the circle. You got me? बेसिकली ये क्या करता है कि वो जो आगे बढ़ता है, वो एनिमेशन के साथ बढ़ेगा या नहीं बढ़े, बिना एनिमेशन का तुम बस यूआई को अपडेट करोगे, वो बताता है. ठीक है, तो क्योंकि हमको एनिमेशन चाहिए, वी विल मेक इट ट्रू. ओके, और यहाँ पे भी हम लोग को वही करेंगे कि जो प्रोग्रेस होगा उसको हम लोग को सेट प्रोग्रेस, वही लाइन को एक्चुअली कॉपी का पेस्ट कर देंगे. हम लोगों को यहाँ पे सेकंड पे रीसेट के टाइम पे कुछ कंप्लीट कुछ नहीं करना है. ओके,
अब एक बार रन करके देखते हैं। देखा, आई वाज टेलिंग राइट, ये जो फॉल्स तुमको सजेशन देता है, सी अब वो वाला 2 करेक्ट दिखा रहा है। Due to Gretel building, it is taking little longer. हाँ भैया रन हो गया। रन हो रहा है। और तुम्हारा क्लिक्स पे हो रहा है क्या? यस भैया। ओके, वेरी गुड। And what one more thing is that now what we will do is, देखो, do you, like Siman and Susubhan, you know what is Rudraksha Mala? Okay. Yes, भैया. हाँ. So Muzamil, Rudraksha Mala is a यस भैया। yeah, it is a chanting aid. Okay, it is a chanting helper which help us to count. Okay, let me even use Google to show you. Yeah, can you see it? Yes, भैया. Okay, Yes. so there are beads attached to the mala. Okay, and if you complete one iteration, that is, if you complete one loop starting from here, going all over this and coming back to here, it it completes one round, and one round has 108 bits. Okay, so we will be implementing that. Once you do 108 counts, then what we will do is you will increase the mala count. Okay, but your like the jump, like the times will again restore to 0, and the mala count will be increased. So to do that, what we will do is we will add a uh, text view first, because to show the mala count you need a text view, right? So what we will do is we will move this reset button little down. Okay. So भैया, before going to that, can you show the uh, Java, the main activity.java file once again? Okay. Yes. Which part do you So want? Hmm. the inside the progress part. Here. Okay. Tell me. I couldn't see the code, so I just wanted to see what was happening there. Nothing. We are just like accessing the object of progress bar. Okay, and we are setting the progress, like the how much has it been progressed. Okay. Oh yes, भैया. Understood. So anybody has idea how to implement, like what is the intuition, कैसे करके हम लोग को सर्कुलर इंडिकेटर इम्प्लीमेंट करेंगे, लाइक सॉरी नॉट सर्कुलर, वो माला वाला चीज कैसे करके करेंगे एक्चुअली। यहाँ पे एक प्रॉपर्टी हम लोग को छोड़ दिए हैं। हाँ, सो यहाँ पे अगर तुम एंड्रॉयड मैक्स, अभी देखो तुम अगर क्लिक करते रहोगे तो वो सर्कल कंप्लीट होता रहेगा। हाँ, पर वो कब खत्म होगा पता नहीं हमको, तो हम लोग क्या करेंगे ना, वी विल डेलिबरेटली पास द वैल्यू
Android Max 108. As I mentioned, in one iteration, there are one iteration of that Rudraksha Mala, there are 108 bits. ठीक है? तो the completion of this circle will represent 108. So you define how many, right, what is the maximum value in the progress indicator, the circular progress indicator itself. Okay. And even you can control the step up. Suppose you don't want to like increase it by 1 and you want to increase it by 3, then you can set one more property over here, that is Android progress. So if you do Android progress to 10, then it will increase by 10 each time. Okay. And it will start from 10 also. Actually, it will go from 10 to 108. My bad. It will go from 10 to 108. Okay. So it will be the default starting value. Yes, exactly. And Bhaiya, one more thing. If we reset, then what will be the, it will come to 10 or 0? No, since we are like what we are doing in this line is first we are making the counter variable 0. Okay. And then we are making the progress like we are by the Java function we are accessing the progress and making it to 0. So on reset it will start from 0. It will not start from 10. Yeah, understood. Okay. But if you remove this and then do reset, then probably it will start from 10. Or if you want to start it from 10, then you need to pass it here. Then it will start from 10 only. Okay. We will let it. Acha, answer me one thing. If we pass 0 here, will it create any problem? Where? This Android thing. First, let me remove this. Okay, we don't need that. Yes, if we will pass 0 directly here, then will there be any problem? Inside the, at the point of current bar? Yes, yes. So it will only show the progress when it will 0. No, if we will pass 0 also, nothing will be different. Okay, the same thing will happen. If we pass 0 or counter variable, does not matter. But for the next thing, it might matter. Okay, so here what we will do is we will add a text view now. So we will like between this, like after this, we want a text view. Yeah. Hello. Yes, tell. Yes. So can we automatically reset that progress bar? Yes, automatically, as in when it completes to 108, right? Yes, sir. Yes, yes, yes. I'm coming to that. We can do that. We will do that actually. Okay. So what we need to do, like that concept will come once we will do the mala thing. Okay. And if we complete 108, then it should reset it by itself. ओके, हमको फिर से करना नहीं पड़ना चाहिए रिसेट, वो खुद ब खुद 108 के बाद फिर से रिसेट हो जाएगा, माला का काउंट 1 से 2 हो जाएगा। ठीक है।
सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, रैप कंटेंट, और एक लेंगे रैप कंटेंट, एंड यहाँ पे हम लोग को टेक्स्ट देंगे। टेक्स्ट में क्या देंगे, माला। ओके, टेक्स्ट का साइज हम दे देंगे 20 dp। व्हाट इज रॉन्ग हियर, कुछ तो हम गलत किए। कैन एनीवन हेल्प मी? मैं क्लोज नहीं किया। नहीं, वो तो है, वो तो हम लोग अभी तक कंप्लीट नहीं किए उसके लिए। एसपी लगेगा, टेक्स्ट टाइप में एसपी लगेगा। यस एग्जैक्टली, एसपी लगेगा। हाँ इट शुड बी। डीपी मतलब पिक्सल डेंसिटी में। हाँ, dp is used for sizes like height width, ये सब डिफाइन करने के लिए dp यूज करते हैं। for text we use sp exactly। फिर we will give it a color, uh, let us just give it a shade of sky blue। okay, yes, and we will close it। okay, it is here, let us increase its size। okay, so what we will be doing is we will be using two text views। okay, why we need two text views? Because none of the time we will be changing mala, but each time the other text, that is the count, will be changing। is it so or not? है ना, माला तो कभी नहीं चेंज होगा ना भाई, माला तो वही का वही रहेगा। पर जो सा तुम्हारा जो काउंट होगा, उसका माला का काउंट, वो तो चेंज होगा। पहले बार 1 रहेगा, फिर 108 टाइम के बाद 2 हो जाएगा, फिर 108 के बाद 3 हो जाएगा। तो अगर हम उसको इसी में लिख देंगे, कहाँ गया तुम्हारा, हाँ, अगर हम उसको यहीं पे ही लिख देंगे, तो कैन वी टारगेट दिस, हम कैसे करके माला 2 कर पाएंगे क्या? नो भैया। नहीं, कर तो सकते हैं पर दैट विल बिकम डिफिकल्ट। कैसे करेंगे? अगर हमें करना है तो हम एक काम कर सकते हैं, मतलब लेट अस नो कि मतलब हम लोग को दो तीन चीज करते हैं तो बेटर होगा। वाह, तो आई टेल यू कि अगर तुम ऐसे कर रहे हो तो ठीक है, वरना कैसे करना है। वाह, सो वी विल राइट इज दिस एज माला काउंट। ओके, माला काउंट txt। so why is this showing? okay, it has not been constrained। okay, so इसको हम कंस्टेंट कर देंगे इसके साथ, बॉटम इसको इसके साथ रखना है, इसको इसके बीच में रखेंगे। I'll add the sidewise constraint। okay, now it is here, we will bring it little left because there will be one more count showing over here। so now we will take a variable, so the variable let be of not private, let us not make it private, let us make it public, int mala। what should the value start with? what should the value start with? 1। can you can anyone tell why 1 and not 0? Zero number of malas shouldn't exist. no, actually when we are counting like पहले बार में तो तुम्हारा पहला माला चल रहा है ना। वाह, जब एक बार कंप्लीट कर लोगे तो 1 हो जाएगा। वाह, तो इसीलिए हम लोग को 1 से स्टार्ट करेंगे। तुम अगर वो क्या बोलते हैं, जब दूसरा बार करोगे तो 108 बार हो चुका है, फिर तुम दूसरा तुम्हारा क्या बोलते हैं उसको कंप्लीट करोगे। ठीक है, तो इसीलिए वी विल स्टार्ट इट। तो भैया जब तो भैया जब 109 टाइम्स चलेगा तब हम 2 करेंगे ना उसको। हाँ, तो सेकेंड राउंड चल रहा है ना वो माला का, है ना। हाँ तो मतलब लॉजिक में लिखेंगे हम 109, राइट? नहीं, माला, माला इज नॉट द काउंट। ओके, माला तो वो एक इटरेशन को बताएगा। जब तुम द स्टार्टिंग बेड से लेके एंडिंग बेड तक आ जाओगे, मतलब
कहाँ गया वो? हाँ यही देखो ये जो होता है ना, यहाँ पे तो नहीं पता चल रहा है। एक्चुअली यहाँ पे जो सूता लगा रहता है, देयर इज अ थ्रेड टाइड ओवर हियर, वो तुम्हारा काउंट शुरू होता है, यहाँ से तुम्हारा काउंट शुरू होता है, एंड व्हेन यू रिटर्न टू हियर देन इट बिकम्स योर वन इटरेशन कंप्लीटेड। सिमिलरली तो वी विल स्टार्ट इट फ्रॉम वन, क्योंकि एक बार हम लोग कर लिए यहीं से यहीं आ गए, तो इट बिकम्स 108 टाइम्स। ठीक है, तो करेंटली वी आर इन द फर्स्ट राउंड ओनली ना, जब तुम शुरू कर रहे हो तुम फर्स्ट राउंड पे ही हो, सो वी विल स्टार्ट Yeah, इट yeah, understood. वन। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे कि here in this on click listener, while we are incrementing, after incrementing we will check, what we will check, we will check that is it the 108 time. If count equals to 100, not count bar, my bad. If count bar is equals to 108, then what shall happen? Then the mala count should be increased. Is it so? Now, along with mala count, if the mala count increases, that is good. What we will also do? Okay, we have not, Reset. yes, but we, while in this text view, we have not actually made the object of the mala count. Okay, so we will copy the ID and create one object for it. So we will write it as mala count, and we will quickly view bind. For view binding, we will write mala count equals to find view by id r dot id dot mala count text. Done. Now what we will do is we will set the mala count to mala count dot set text, and what we will pass over here is we'll pass the string mala this plus hello ಪೊರಟಿಯ ಕಾಲ್ ಮೊದಟಿಗೆ ಪೊರೆ ಕಾಲ್. Yes, so we will add mala plus what we will add, what we will concatenate. Remember concatenation, everyone. So using concatenation, we need not to make a extra thing, okay, extra variable. So we will just concatenate the mala. Okay, Yes, Maya. with this approach you can control by one only, like, or without taking anything else. And what we will also do is, like, here we are writing only one thing, right? Actually what we are doing, we are resetting directly here, we don't have any function. So what we will do is uh, we will make a function. Okay, so to make a function we will come out of the on create, and the function should be a public function. It should not return anything, so void. What will be the name of the function? The name should be reset. Okay, and upon calling this function, the count bar should be 0, count text should be 0, and the progress bar should be 0. We will paste here, and from the reset button we will call the reset method. You understood what happened? क्या किया हम लोगों को, समझ में आया ना? हम लोग कुछ नहीं किए, जो हम लोग यहाँ पे Yes, Maya. स्टेप बाय स्टेप करके कर रहे थे, we just created a function out of it and we called it. Okay, the same function will also be called upon here.
if it is 108th time. ठीक है. Now you see that after 108 times the mala will reset. Let us try. Let us check if it's so. Yeah, so I was telling, right, the mala is not coming. So what we will do, we will use string dot value of. You remember the string dot value of function? Yes, Bhaiya. I guess still the problem will not be solved because we are trying to concatenate, but actually this is not the right practice. Okay, what we are doing is a wrong practice. I'll tell you what is the right practice. Give me a minute. Yeah, so it is not working. Actually, what is happening is here you cannot like target the whole thing and concatenate. Okay. So instead of this, what we will do, what we were actually doing was we will take a linear layout. Can anyone help me? What was linear layout? Yesterday we had discussed. या सब आइटम्स या तो वर्टिकली अलाइन होंगे या फिर हॉरिजॉन्टल. Yes, if you want to align items in a line, be it vertical or horizontal, we use linear layout. So we will take rep content, and then we will like take after linear layout, we will be making the orientation as horizontal. Okay. So after making the orientation horizontal, what we will do is uh, yes. So that's it. We need not to define much thing over here. It is saying that it is not constraint. We will fix that. No problem. Now we will paste the text view. Okay. So here the mala, this is static. We need not to do anything. Okay. But what we will do is we will change, like we will take one more text view with the same property. Okay. Same property as of this, and quietly copy. But instead of mala, what we will do is we will write one. I will write one. Okay. And now what we will do is we will actually, let us give it some dp so that we can easily move it. Okay. This should be constrained to this.
This should be constrained to this. Now we will make it lab content. Okay, now it is in center. Now what we have done is actually we have kept this static mala column in one part, and we have made one as the another text view. We will give one ID to this as we will give ID to this as mala count. Okay, and what we will do is mala, we will change this mala count text to text only, and here we will write mala count text. So this is the mala text only, and this is the mala count text. Okay, now what we will do is we will target to this element. Okay, mala count text, and now we will set the text to be mala. ओके, समझ में आ गया ना क्या किया हम कुछ नहीं किए, हम लोग को काउंट को शो करने के लिए एक और एक टेक्स्ट व्यू लिया है जो कि हमारा माला वाला टेक्स्ट व्यू से अलग है, और इस पे हम लोग को बस काउंट दिखाएंगे और कुछ नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं ना कि माला का जो सा वैल्यू होगा यहाँ पे देखो, तो हम लोग को जो माला का वैल्यू होगा जो कि माला काउंट है, वह वो माला काउंट पे हम लोग को माला का वैल्यू पास कर दे रहे हैं। ठीक है, now let's run it again and check if it is working. See if you okay, done it. Now the mala count become 2. Yes, भैया. हो गया ना? अब देखो what the, like if you see the app which we were referring to, they have done nothing else than adding some effect. Okay, and other thing, let me show you. I'll join from my mobile. Is my screen visible? Is it visible? Yes, we are. So if you see this app, okay, they have integrated the Yes, yes. same thing. Okay, wait. So these are, they have done designs. Okay, this is nothing. तुम 2-3 दिन UI और करो, हुआ। ये सब जो डिजाइन्स बनाए इन लोग को,
तुम ये चीज़ को बड़ा आसानी से कर लोगे। डिफॉल्ट लाइक दिस। अब देखो। अच्छा, लेट अस इम्प्लीमेंट दिस फीचर। ये जो फोटो दिखाए हैं, वो बाय दिस यू कैन ऑल्सो नो हाउ टू implement image view। ठीक है, इट विल बी अ गुड ड्रिल। ठीक है, नथिंग, कुछ नहीं करना है हमको। what we will do is we will come to this constraint layout here, and since we want it to be on top, what we will do is we will add a, give me a minute please। give me a minute please। ठीक है, ओके, डन। what I will do is we will take up image view। ठीक है, एक इमेज व्यू लेंगे। अच्छा, माय स्क्रीन इज नॉट विजिबल राइट? No, भैया। Visible है भैया। ये द ऐप वन इज विजिबल और द कोड? Both are visible. We can just unpin. ओके, नाउ माय कोड इज विजिबल। No, भैया, code is not visible. नो भैया, ओके ओके ओके। कोई छोटा स्क्रीन हो रहा है तो इसीलिए विजिबल नहीं हो रहा है। अच्छा, अभी अभी दिख रहा है, अभी दिख रहा है। Yes, भैया। यस भैया। ओके, यस। सो हम कुछ नहीं करेंगे, विल टेक अ इमेज व्यू। ओके, 200 डीपी। पहले तो एक स्क्वायर साइज दे देते हैं ताकि हम जान पाए। I'll take 200 dp, फिर let us download a photo of, we will suppose we take the photo of
what this Maharaj is told. I forgot his name. Can anyone help me? Let us check. We'll just use this image. Okay. I actually am sorry, but I forgot the name of that god. Okay. So I'm for my convenience, I am taking a screenshot. Okay. You can just download that. Okay. Now we will. So it is an important lecture where you learn how to add a image to the image view. Okay. So here in this drawable folder, you keep all the images. Okay, in this drawable directory, you keep all the images. While you add to the drawable resource, you remember that you cannot use any capitals. Okay, so yes, we will be moving it to here, and so now a error will come that this nomenclature is wrong. That is because we have used capital S. Okay, so we will be just renaming it. To rename, what we will write, Radha Krishna, Radha Krishna image. Okay, yes. Now what we will do is, here in source, in that source, we will add Radha Krishna image. Okay. Mm. Now it is square, so we will increase the width. Okay. So just because we have taken a little square type of photo, if you take a wider photo, okay, and you make it even 300, and that works for us. We will bring this, we'll center it. Where shouldn't we take it inside constant layout itself? No, it is constant layout. No? Look, this is the root element. Okay, this is the main frame. ये हम लोगों का background है. Actually, if you see, इसको तुम मैच पेरेंट, एक काम करते हैं, लेट मी शो यू व्हाट इज दिस. मैच पेरेंट की जगह में अगर मैं 300 करूँ, तो कैन यू सी, ये एक लेआउट पहले से है. वाह. तो हम इस लेआउट, दिस इज द रूट लेआउट. इट इज लाइक तुम एक जैसे बॉडी टैग मान रहे हो ना, दिस इज दैट बॉडी टैग जो कि तुम्हारा स्क्रीन का साइज हमेशा लेता है. ठीक है, उसीलिए हम यहाँ पे मैच पेरेंट करते हैं, और इस कंस्ट्रेंट लेआउट के अंदर ही हम लोग को ये इमेज को डाले हैं. दैट इज वाई यू सी देयर आर स्प्रिंग्स. ओके, यू हम लोग को इसको ऊपर से कनेक्ट कर देंगे, ये स्प्रिंग को हम नीचे से कनेक्ट कर देंगे. ठीक है, समझ में आया सुशोभन? This way. या, सो डन. तुम अगर एक वाइड फोटो लोगे, वाह, तो ये पूरा कवर कर जाएगा, जैसे कि ये तुम्हारा ऐप पे किया है. ठीक है. अब अगर तुमको इसका एजेस को क्रॉप करना है, तो कल हम जैसे ये सर्कुलर ड्राइबल किए थे ना, वाह, इसके जगह में हम लोग को ओवल के जगह में इसको ले लेंगे, या फिर शायद एक मिनट, इमेज का भी कॉर्नर रेडियस नहीं. yes. तो हमें क्या करना पड़ेगा ना, हमको एक ड्राइबल बनाना पड़ेगा. वाह, ये जैसा तुम्हारा रेक्टेंगल था, ये रेक्टेंगल ऐसे लोगे. वाह, फिर इस पे तुम्हारा जो कॉर्नर प्रॉपर्टी है, उसको डिफाइन करोगे, कॉर्नर्स, एंड उस पे रेडियस को तुम मान लो नॉट टू 10 dp देते हो.
एक और चीज है, अगर हमें मल्टीपल मल्टीपल ड्रॉएबल डिक्लेयर करना है तो हम एक एक्सएमएल फाइल के अंदर डिक्लेयर करेंगे या फिर मल्टीपल बनाएंगे उसे। देखो, सो अगर तुम देखोगे तो देयर आर मल्टीपल थिंग्स। वाह, अगर हमको हर कंपोनेंट के लिए बनाना है तो हम हर चीज़ के लिए एक एक ड्रॉयबल बना सकते हैं। बट जब हमें कुछ बहुत सारा चीज़ करना होता है तो हम लोग को तुम्हारा ये जो वैल्यूज़ डायरेक्टरी है ना, यहाँ पे हम लोग को एक स्टाइल्स बोल के एक नया सैंपल डायरेक्टरी बनाते हैं। वाह, एंड वो स्टाइल्स के अंदर एक स्टाइल शीट जैसा रहेगा, उधर तुम बहुत सारा चीज़ डिफाइन करोगे और उसका एक यूनिक रेफरेंस आईडी होगा, मतलब एक नाम होगा। वो नाम से तुम वो स्टाइल वाला चीज़ को यूज कर सकते हो, समझे? तो अगर तुम यहाँ पे ड्रॉयबल ऐड कर रहे हो तो तुम्हें एक एक रिसोर्स फाइल के हिसाब से ही ऐड करना पड़ेगा। पर अगर तुम्हें ऐसे एक स्टाइल शीट बनाना है जहाँ के तुम बहुत सारे कंपोनेंट के बहुत सारे बैकग्राउंड यूज करोगे, वाह, तो यहाँ पे तुम एक स्टाइल फोल्डर बनाओगे, स्टाइल डायरेक्टरी बनाओगे और उसके अंदर एक स्टाइल शीट लोगे जिसको स्टाइल डॉट एक्सएमएल तुम डिफाइन कर सकते हो। इन दैट स्टाइल डॉट एक्सएमएल यू विल डिफाइन द लेआउट फॉर ईच कंपोनेंट। इज दैट क्लियर? और उसको डायरेक्टली हम एक्टिविटी में यूज कर सकते हैं। यस, तुम उसको डायरेक्टली एक्टिविटीज में यूज कर सकते हो। ठीक है, रेस्ट जो यहाँ पे यस भैया। हाँ, रेस्ट जो देखो, यहाँ पे अगर हम लोग को वो क्या बोलते हैं, फ़ोन पे फिर से आए तो यहाँ पे एक और चीज़ है, वो है तुम्हारा ऑन क्लिक पे देखो एक फ्लोटिंग। फ्लोटिंग। यस, सो यस, देखो हम लोग जब क्लिक कर रहे हैं तो ये फ्लोटिंग जो आ रहा है ना, वो तो इसका कोड आई विल ड्रॉप इन द ग्रुप। ये कुछ नहीं है, बहुत बेसिक सा है। वाह, कुछ नहीं होता है, एक रैंडम टेक्स्ट, एक रैंडम 1 से लेके 256 के अंदर, ओके, यू सॉरी 255 के अंदर, यू यू रिमेम्बर दैट व्हाट वाज दैट, एक था तुम्हारा, how can we define HTML colors, how can we define colors in the CSS, sorry, do you remember? किसी को याद है कैसे करके हम लोग को, what are the ways we can use define colors in HTML? यस भैया, एक तो लिख सकते हैं वाइट ब्लैक उसका नाम से, या फिर हम हेक्साडेसिमल नंबर यूज कर सकते हैं हम्म डिफाइन करने के लिए, सिक्स सिक्स हेक्साडेसिमल। हम्म। या फिर हम उसका कलर कोड दे सकते हैं, मतलब नंबर, आई मीन मैंने 0 से लेके 255 तक। Yes, what was that called? RGB color, मतलब तुम लोग RGB का, आरजीबी कलर, यस। हाँ, RGB का वैल्यूज दे सकते हो। तो हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग को यस। रैंडम वैल्यू जनरेट करेंगे, कैसे करके, हम लोग को एक रेंज फंक्शन लेंगे, रेंज में एक रैंडम सॉरी एक रैंडम फंक्शन लेंगे, रैंडम इंट फंक्शन लेंगे, उसके अंदर हम लोग को जनरेट करेंगे 1 से लेके 55 तक 3 वैल्यू। ठीक है, वो 3 वैल्यू को क्या करेंगे, हम लोग को RGB पे पास कर देंगे। ठीक है, तो उससे क्या होगा, हमेशा एक यूनिक कलर निकल के आएगा, है ना? यस भैया। हाँ, तो जब उसके साथ हमेशा एक एक यूनिक कलर निकल के आएगा, तब हम लोग को उसको यूज करेंगे तुम्हारा, क्या बोलते हैं, हाँ, तो वो यूनिक कलर को लेके हम लोग को जो टेक्स्ट होगा उस पे वो चीज़ अप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे, जैसे मान लो अभी हम लोग को यहाँ पे जब 108 और 107 हो तो हम लोग को क्या करना, चलो मान लो कि हम लोग को स्टार्टिंग पे 0 पे हमको क्या करना है कि कलर चेंज करना है, तो जैसे सेट टेक्स्ट है ना वैसे सेट कलर प्रॉपर्टी भी होता है। ठीक है, तो तुम डॉट सेट कलर प्रॉपर्टी करके उस पे उसका कलर चेंज कर सकते हो, तो उस कलर पे तुम RGB वैल्यू पास कर दोगे।
तो वो जो टेक्स्ट होगा, सपोज यहाँ पे जैसे बार बार क्या राधा, ऑन क्लिक पे राधा 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 जो सा बार बार आ रहा है, तो उसका कलर चेंज हो रहा है। तो हम लोग को वो राधा जो टेक्स्ट होगा, जो टेक्स्ट व्यू राधा को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, उस पे वो टेक्स्ट व्यू का नाम लेंगे, डॉट सेट कलर लेंगे, और उस पे वो आरजीबी वैल्यू पास कर देंगे। तो हर क्लिक पे हमको एक यूनिक कलर मिलेगा। और एल्स क्या कर सकते हैं, हम एक एरे बनाएंगे, वाह, जो एरे पे 10 पहले से कलर रहेगा, ग्रीन पिंक येलो रेड कुछ भी, 10 कलर रहेगा। हम क्या करेंगे, एक रैंडम वेरिएबल लेंगे जो 1 से 10 के अंदर एक रैंडम नंबर क्या करते हैं, प्रेडिक्ट करता होगा। और वो वहाँ पे जोन सा तुम्हारा स्ट्रिंग रहेगा, उसको पास कर देंगे हम लोग को। वैसे करने से भी होगा। सो देयर आर मल्टीपल वेज। हम लोगों को कल कोई एक ट्राई करेंगे, कोई एक तुम्हारा, आज तो टाइम हो गया हम लोगों का यही करते करते। कल हम लोग को कोई एक ट्राई करेंगे, कैसे करके हम लोग को एक रैंडम चीज, मतलब एक रैंडम टेक्स्ट विथ कलर फ्लोटिंग इफेक्ट के साथ कैसे कर सकते हैं, ठीक है। एंड कल हम और एक, यस भाई। हाँ कल हम और एक प्रोजेक्ट बनाएंगे। हम लोगों को क्विकली वी विल स्टार्ट एंड वी विल जस्ट रैप इट अप। वी विल यूज वन मोर स्मॉल प्रॉपर्टी नोन एज साउंड बक्स। साउंड बक्स बोल के एक क्लास होता है, वो क्या करता है ना, जैसे तुम व्हाट्सएप पे चैट करते हो, जब सेंड बटन दबाते हो, तो देर इज अ साउंड ऑफ पिंग, पिंग करता है ना, वाह। सो यस भैया। there is a class, that is soundbox class, which controls the small sounds. Okay, so you can add on tap sound, and if you want to when the 108th time runs, then if you want to play a thing like 100 time completed, if you want to add short audio clips, then how to do that we will learn tomorrow. Okay, and after that we will make a small timer app. Okay, what you mostly you use clock one, okay, clock वाला timer app use करते हो। कल हम लोग को we will make one timer app of ourselves, and हम लोग को उसको use करेंगे, and we will see on top of that what we can implement। okay, तो वहाँ पे what we will do is we will do something like, when you sit to study, then you just set a study timer, and after the seventh week sorry, after the seventh day of the week, you can create an analytics out of that. Okay, so we will be starting the basic, but after, once we do firebase thing, okay, once we integrate firebase to our projects, then we can store the data and we can create a graph out of it. Okay, so slowly and gradually we will do that। पहले दिन पे अगर वो करने लगेंगे, फिर we will lose on these basic concepts। ठीक है, आज तुमको पता चल गया ना कि कैसे करके तुम एक टेक्स्ट का सब कुछ कंट्रोल कर सकते हो, कलर से लेके टेक्स्ट तक। कलर, इवन यू कैन चेंज द साइज ऑल्सो यूजिंग सेट साइज। तुम उस सेट टेक्स्ट साइज, तुम उसका साइज भी चेंज कर सकते हो। नॉट ओनली साइज कलर टेक्स्ट, बट उसको उसका स्टाइल भी चेंज कर सकते हो उसको। यस, वन मोर थिंग, विजिबल एंड उसका विजिबिलिटी, इवन यू कैन कंट्रोल द विजिबिलिटी, सब चीज तुम कर सकते हो। ठीक है, यूजिंग द सेट प्रॉपर्टी। सेट और वो एट्रीब्यूट का नाम, अगर तुम सेट के बाद वो एट्रीब्यूट का नाम लिखते हो, तो यू कैन कंट्रोल एनीथिंग ऑफ द टेक्स्ट व्यू, एंड इट इज नॉट एप्लीकेबल टू टेक्स्ट व्यू ओनली, it is applicable to all of the views। Got it? Yes, we are. Yeah. So, Muzamil, are you finding this interesting, or you have done these projects or similar projects, so it doesn't astonish you much? So I never did the time progress bar, so it was interesting progress bar. Okay, so
You had not implemented progress bar anywhere earlier. No way. Yes. Okay, everyone else, Muzamil can leave now. Okay, today we will end this session here. We will continue from tomorrow, from the next parts. Okay. Muzamil, what about your audio thing that day you were? If anyone wants to stay, they may. Okay. Uh, yes. Did you solve that audio player problem? No way. It seems like the MP3 file that is corrupted or something. Okay. Okay. So I was delving deep into that topic and I found that are you following any lecture or anything? And for that audio player, I was following that code with Harry lecture. Okay, okay. So yeah, you are using that media player only, na? Or you are using anything else? Same that media player. Media player class only. So if you are using the media player class only, did you try with changing the audio? Or changing audio means. Like, did you try to change means just as you found that the uh, as you found that the your code was sorry, the song was corrupted, like the mp3 file was corrupted, did you try with changing it? Yes, where but also same thing came. All the files are corrupted, or that association thing, or that uh, code or something like encoded something. Okay, 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 okay. Then if you like when you run it, you would copy the error and drop it in the group. I'll once check and help you out. Okay. Yes, where that error means logcat error. Yeah, either you can copy the logcat error, like if you are doing that. Otherwise, like yes, without logcat you cannot do that. Yes, matlab the project is getting built now. There is no Gradle error or the ID error anything. No, bhaiya. Okay, then only logcat can help us. Then just log the error in the logcat and drop me. Okay, I'll check into it. Yes, bhaiya. And I have added one audio player like repository. I'll also drop the link to you. If you want to check, you can check. But this audio player, what it does is it takes the permission of your local device and it like तुम्हारे फोन में जौन जौन सा रहता है ना ऑडियोस, it fetches those audio and you can play one out of them. Okay, let me give you a short demo. Yes. So if you see audio player, look, these are the local mp3 files that has been found. Okay, and when you click on this, then it plays. Yes, bhaiya. So we have used nothing, but we have used the local DB. Okay. So how using the external media, sorry, external storage, we have just read the external storage using a cursor. Okay. So in one of the project, we will be also using cursor to read these things. Okay. We will, I guess in the if you want we can add it to our loop also. In the seventh or the eighth day we can also create a music player. Okay.
Yes, bhaiya. Yeah. Okay. Thank you, everyone. Thank you, bhaiya. Okay. Good night, bhaiya. Good night.